yes, welcome once again in CPJ Academy. We had left on on annelids, and right now you will gonna learn about the arthropods. So just start this thing. See, as you know, that this is one of the largest phylum. But before that, just let's have a look what actually it is. See, if you see this word like arthropoda, or if you break these term, like it consists of arthro plus poda. Okay, so this arthro means jointed. Okay, and this poda stands for foot. So arthropoda, you can say, which organism having with or organism having jointed foot. Okay, so this is arthropoda. Second thing, it is the largest phylum of animals that includes insects. कैन यू इमेजिन, लाइक जितने भी आप ऑर्गेनिज्म देखते हो उसमें 85% जो है that all comes under this phylum, like in arthropoda. Okay, they have a organ system of organization. मैंने आपको पहले ही बताया है, like organ system level of organization क्या है. You can go and check that, check there. So yes, they are triploblastic. Triploblastic, that means 3 germ layers हैं. Okay, 3 germ layers means ecto भी है, okay, endo भी है, and also mesodermal layer भी present है. Okay, then they are coelomates, that means they possess body cavity. Okay, then they are bilateral symmetrical, and chitin is exoskeleton. Okay, see in your exam you may get that कि जो आपका chitin है, ठीक है, ये जो chitin है कैसा कंपाउंड है, ठीक है. सो इट्स सो ये जो आपका chitin है बेसिकली ये आपका नाइट्रोजन कंपाउंड है, ठीक है, नाइट्रोजन बेस्ड पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल है ये आपका, और एक काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है, ठीक है. सो काइटिन जो है ये आपका नाइट्रोजन पॉलीसेकेराइड कंपाउंड है जो कि एक्सोस्केलेटन है, मतलब आउटर कवरिंग जो है आर्थ्रोपोडास की वो इसी मटेरियल की है, ठीक है. बायलेटरल सिमेट्रिकल, दैट मीन्स जब आप उसको कट करोगे तो आपको लेकिन सिर्फ एक प्लेन से कट करना है आपने, देन यू कैन हैव 2 इक्वल हाफ्स. नाउ अगर आप इसकी बॉडी देखते हैं, सो इट कंसिस्ट ऑफ हेड, thorax and abdomen, and again that is jointed appendages as the name suggests, like in arthropoda. Respiratory organs इसमें present होते हैं, that is gills, book lungs और tracheal system, tracheal system. Then excretion is through Malpighian tubules. See, this is a very important point. Just mark this point important. क्योंकि आपका लाइक नॉट लाइक इन आर्थ्रोपोडा जो भी अभी तक आपने फाइलम किया, वेदर इट इज एनालिड और समथिंग एल्स, वहां पर आपसे ये पूछा जाता है कि इनका एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, ठीक है. सो इन आर्थ्रोपोडा इट इज थ्रू मैल्पीजियन ट्यूब्यूल. ओके, सेंस ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट है, दैट इज एंटीना और आइज. फर्टिलाइजेशन जो है इसकी इंटरनल है, ये आपको रिमेंबर करना है, याद रखना है आपको. सी जो भी है इसका फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ओविपेरिस है, डायोसिस है, ये सब कुछ मैंने इसका पार्ट फर्स्ट यू कैन चेक. मैंने प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बताया, लाइक व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सो यू कैन हैव एन आइडिया. ओके, देन दे आर ओविपेरिस. ओविपेरिस, सी दिस ओवा मीन्स एग काइंड ऑफ, है ना, दैट मीन्स दे ले एग्स. डायोसिस मीन्स sexes are separate. Di means दो, ठीक है, sexes are separate. Now the thing is डेवलपमेंट जो है इसकी वो डायरेक्ट भी होती है और इनडायरेक्ट भी होती है. नाउ देयर मस्ट बी अ पॉइंट इन योर माइंड, लाइक व्हाट व्हाट इज दिस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. सी आपको पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है अपने फर्स्ट स्टेज से एंड स्टेज तक, फर्स्ट स्टेज से एंड स्टेज मतलब मैच्योरिटी लेवल. कुछ ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट मतलब फर्स्ट लेवल से
मेच्योरिटी स्टेज में विदाउट एनी लार्वल स्टेज चले जाते, ठीक है, देयर इज नो लार्वल स्टेज। आपको पता होगा ना, लाइक प्यूपा एंड जो स्टेजेस आती है फॉर इन केस ऑफ बटरफ्लाई और इन केस ऑफ फ्रॉग देयर इज लाइक अनदर स्टेजेस, दैट मीन्स जिसमें लार्वल स्टेजेस एब्सेंट है, ठीक है, जिसमें एब्सेंट है उसको बोलते हैं डायरेक्ट। क्यों? फर्स्ट पॉइंट से डायरेक्ट मेच्योरिटी लेवल पे आ गया, ठीक है, स्टार्टिंग से मतलब जो था आप बोल सकते हैं कि मेच्योरिटी फॉर्म में विदाउट एनी लार्वल स्टेज आया तो वो आपका डायरेक्ट काइंड ऑफ डेवलपमेंट है। और वहीं अगर लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट है, ठीक है, लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट है, देन दैट काइंड ऑफ डेवलपमेंट विल बी टर्म्ड एज इनडायरेक्ट। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। सो जो आर्थ्रोपोडाज हैं दे मे बी डायरेक्ट और दे मे बी इनडायरेक्ट, ठीक है। अब जैसे आपके एग्जांपल्स हैं लाइक हनी बी है, सिल्क वॉर्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिल्क वॉर्म का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज बॉम्बिक्स। ओके, सो सिल्क वॉर्म का साइंटिफिक नेम यू नो गेट दैट क्वेश्चन, दैट इज बॉम्बिक्स। And for king crab is limulus. Okay, just have a look, just have a look like what kind of organism we are talking about here. So American dogtick, this is an example for the arthropoda. See, you can have a look, jointed legs, है ना, सभी में ऐसे हैं, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल इज बिटल, डियर टिक, milkweed bug, mosquito, that is also an example of the arthropoda. Then there is crab, American lobster, and ladybird beetle. Second phylum we are having is mollusca, ठीक है। तो ये जो आपके molluscas हैं, this is a second largest. So first क्या था, you please tell me. Yes, first one was you know, your arthropoda, that was the first one, and second one is your mollusca. Second largest, they are invertebrates. Okay, invertebrates means you can say without backbone, that means they don't have a backbone. Okay, so invertebrates means without backbone you can say. Second is you know, they are terrestrial. Terrestrial means जो लैंड पे रहते हैं, okay, they may be terrestrial or aquatic, that means either they can live on land as well as they can live in water. Aquatic means water में जो रहते हैं, ठीक है। देन अगर आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हो इसका, सो दैट इज ऑन यू नो इन ऑर्गन लेवल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बायलेटरल सिमेट्रिकल है ये, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्रिकल मतलब आपको पता ही है कि टू हाफ्स इन वन प्लेन। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, दैट मीन्स 3 जर्म लेयर्स हैं इसकी। सिलोमेट्स हैं, सिलोमेट्स मीन्स बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट। बॉडी जो है इसकी डिवाइडेड है हेड, मस्कुलर फुट एंड विस्करल हम्प में, विस्करल हम्प में। लेट्स अनदर थिंग, दीज आर नॉट सेगमेंटेड, ओके, ये सेगमेंटेड नहीं होते, और यू कैन से अनसेगमेंटेड दे आर। क्लियर? feather like gills are present between hump and metal. Okay, just imagine, वैसे ये स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ आपको सिर्फ समझाने के लिए। लेट्स से ये आपका हम्प है, ठीक है, और ये आपका लेट्स से मेंटल है, ठीक। तो यहाँ पर इसके बीच में, हम्प और मेटल के बीच में, यू कैन से देयर इज अ feather like gills. देन यू नो स्पेस, अब ये देखो एक आपका हम्प था, ये मान लो आपका हम्प है, ये आपका मेंटल। अब हम्प और मेंटल के बीच में जो स्पेस है दैट इज टर्म्ड एज मेंटल कैविटी। ओके, so in your exam you may get that question like what is mental cavity. So mental cavity is nothing, it is just the space between hump and mental. Okay, so space between hump and mental is known as mental cavity. Then you know this mollusca are dioecious. Dioecious means sexes are separate
जो मेल वाला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मेल में होगा, फीमेल वाला फीमेल में होगा, मीन्स दो सेक्सेस अलग अलग हैं। ओविपेरस है, दैट मीन्स दे ले एग्स एंड इन डायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब इसमें लार्वल स्टेजेस आएंगी, ठीक है, लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट, clear? Mouth contains file-like respiring organ for feeding, that is radula. So what is radula? That is very important question you can have in your exam. So radula, it's a mouth that contains file-like structure for grasping feet. Okay, so that is radula. An example for that, octopus and phylum. Okay, so octopus is an example for the mollusk. Just have a look, see octopus is there. There are so different examples, or you can say that different organisms that that come under that category, that under phylum. Okay? So slug, cuttlefish, oyster, squid, and so on. You can have a look and can write down in your notebook. So let's come to the next thing, that is phylum Echinodermata, or you can say the spiny skinned animals. Okay, they are spiny skinned animals. See this word, that is Echinodermata. This echino means, just this echino means spiny, and dermata, that is a kind of skin. Here's that the name comes like spiny skin, that means they have spine. Okay, and also one more thing, that why we call this phylum which is spiny skinned animals, because the endoskeleton, like this is a kind of Echinodermata. So अगर हम इनके अंदर की बात करते हैं, लाइक इनके एंडोस्केलेटन स्ट्रक्चर की बात करते हैं अगर हम, so that consists of a calcareous ossicles. Now a question may come in your mind, like what is calcareous? See, calcareous, see नाम से clear, that is something kind of calcium, है ना? So basically calcium carbonate से consist होता है, which is very hard. ठीक है, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये हार्डनेस को रिप्रेजेंट करता है, और जो इकाइनोडर्मेटास का एंडोस्केलेटन, एंडो मींस अंदर, जो अंदर का उनका स्केलेटन सिस्टम है, दैट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली दिस केमिकल, ओके, एंड दैट इज वेरी हार्ड. ओके, देन दे आर मराइन. मराइन मींस जहां पर भी हाई कंटेंट होता है सॉल्ट का, हाई कंटेंट ऑफ सोल्ट, वहां ये रहते हैं. दैट मीन्स दे लिव इन marine water basically. That means they require high content of salt to live. Then organ system level organization है ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लो मतलब तीन, है ना, तीनों स्किन है, एंडो भी है, एक्टो भी है और मीजो भी प्रेजेंट है. सिलोमेट है, दैट मीन्स दे पॉजेस बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी पॉजेस करते हैं. वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है, जो कि देन हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन, दैट देयर इज आल्सो. डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसका वो कंप्लीट है. कंप्लीट मींस माउथ एंड एनस बोथ प्रेजेंट, बोथ प्रेजेंट. देन यू कैन हैव अ लुक, लाइक सेक्सेस जो है इसके सेपरेट है, दैट मींस ये डायोशियस है. ठीक है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है. ठीक है, एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड द बॉडी, एक्सटर्नल मीन्स outside the body. Okay, and fertilization means fusion of gamete. So fusion, let me write here, let's have a look. Fertilization means fusion of gametes, and external means outside. तो जो फ्यूजन गैमेट्स का है वो आउटसाइड द ह्यूमन, आउटसाइड द बॉडी होगा, आउटसाइड द ऑर्गेनिजम्स बॉडी होगा बेसिकली. ओके, देन डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है, मतलब लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट है होगी. एग्जाम्पल है लाइक स्टारफिश, सी कुकुम्बर और क्यूक्यूमेरिया और एंटीडॉम. You can have a look of different examples of the Echinodermata, like this one, Holothuria. One thing, see, आपके एग्जाम में आता है that you have to draw certain kind of structure of the Echinodermata, so you can draw. This is very easy structure you can draw. You can
or for that if you want to draw that structure, because in your exam you may get it. Okay? So let's come to the next thing, that is hemichordata. See, just let me, see, hemi means you can say half, okay, and chordata means, that means chordates. Okay, that means hemichordates are half chordates. Okay, that means although we say like it's not completely same like chordates, but yes, they have some structure which are similar to the chordates. That's why the phylum name is hemichordata. Next thing is that this hemichordata is also known as a corn worms. Now there is a question, why this hemichordata is known as a this acorn worms. See, do you know what is acorn? Acorn, it's a fruit from oak tree. Okay, first of all you should know like what is acorn. So acorn is a fruit that is from oak tree. Now the reason that why we say like hemichordata is acorn worms, just look at the structure. That structure is something similar to acorn. Okay, that fruit, that's why इसका नाम acorn worms रखा गया. Just have a look. Okay, so reason पता लग गया ना कि acorn worms क्यों बोलते हैं. The another name for the hemichordata is acorn worm. Okay, just because जो इसका first end structure है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया. Okay, this is somewhat similar to the fruit, somewhat similar to this acorn. That's why. Second thing is they are non-chordata. That means they don't have a backbone, we can say. Okay, then जैसे नोटोकोड होता है इसमें, अगर हम अपनी बात करें लाइक अपनी बात कर रहे हैं या हम वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं, उसके केस में नोटोकोड होता है. इसके केस में प्रॉपर नोटोकोड तो नहीं है, बट एक स्ट्रक्चर है स्टोमोकोड. ओके, स्टोमोकोड which is just like to नोटोकोड. इट्स नॉट completely like to नोटोकोड, बट हाँ थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर स्टोमोकोड का सिमिलर है नोटोकोड से. रेडिमेंट्री स्ट्रक्चर है, कॉलर रीजन में है, लाइक इस रीजन में यू कैन हैव अ लुक देयर. यहाँ पर स्ट्रक्चर एक होता है, दैट इज स्टोमोकोड. okay, इट्स अ वर्म लाइक समझ में आ गया ना कौन सा वो अकोन, उसका स्ट्रक्चर वैसा है. मेराइन एनिमल्स है, दैट मीन्स सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, दैट मीन्स हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. बायलेटरल सिमेट्रिकल है. ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स. 3 लेयर्स हैं इसकी, 3 जर्म लेयर्स हैं इसकी. एंडो, एक्सो एंड EEM. Body is cylindrical, composed of anterior proboscis, collar and trunk. Basically 3 चीजें हैं इसमें. Okay, this one collar and trunk. Clear? Then open circulatory system है. See, open that means they don't need any arteries or veins. ठीक है, जो ब्लड है डायरेक्ट अपने टारगेट टिश्यू पे पहुंच जाएगा. ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स जो ब्लड है डायरेक्ट अपने लाइक हार्ट से डायरेक्ट अपने टारगेट टिश्यू पे पहुंचेगा. दैट मीन्स दे डोंट रिक्वायर एनी आर्टरीज और वेन्स. ठीक, देन रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स के थ्रू है. एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है दैट इज प्रोबॉसिस ग्लैंड. सेक्सेस जो है सेपरेट है. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है. एक्सटर्नल दैट मीन्स सेपरेट मतलब डायोशियस. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द बॉडी. क्या तो फर्टिलाइजेशन है वो आउटसाइड होगी. और डेवलपमेंट कैसी है, इनडायरेक्ट है, मतलब लार्वल स्टेजेस इंक्लूड है इसमें. ठीक है, एग्जांपल इसका बेलेनोग्लोसस और सेक्लोग्लोसस. जस्ट हैव अ लुक देयर. सी दिस proboscis, you can see. Okay, this proboscis. Now there must be a question in your mind, like what is this proboscis and the role of this. See, the role, if you like, it's
दिस प्रोबोसिस इज अ काइंड ऑफ अ ciliated मस्कुलर ऑर्गन। सी जब भी आप कहीं पर सिलिएटेड वर्ड देखते हैं कि दिस सिलिएटेड, दैट मीन्स दैट विल गोना हेल्प इन लोकोमोशन। जहां पर भी सीलिया जो होते हैं वो आपके लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट। अगर इसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो दैट विल गोना हेल्प। एंड ऑल्सो फूड के कलेक्शन में भी हेल्प करता है, कलेक्शन ऑफ फूड में भी हेल्प करता है ये, ठीक है। Here you can have a typical look like this is the collar region, okay, and that layer like that is into genital region. Genital region is there. Hepatic, hepatic जहाँ पर आ जाए that means connected to liver, okay, and this NS means that is your okay. Next come to the phylum chordates. See chordates, जहां पर भी आपको कोडेट दिखे सबसे पहली बात कि इसमें नोटोकोड प्रेजेंट, ओके। नोटोकोड इज अ काइंड ऑफ यू कैन से बैकबोन जो इसमें प्रेजेंट, ओके। हैव डोर्सल होलो नर्व कोड एंड पेयर्ड पेरेंशियल गिल स्लिट्स, ठीक है। देन इसका अगर आप सिमेट्री लेवल देखें तो दैट इज बायलेटरल सिमेट्रिकल, ओके। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब एंडो एक्टो और मीजो, ठीक है। एक्टो एंडो एंड मीजो तीनों लेयर जर्म लेयर प्रेजेंट होती है। सिलोमेट से मतलब बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, ओके। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। क्लोज का मतलब क्या होगा, आर्टरीज वेन्स कैपिलरी सब इन्वॉल्व है इसमें, ओके। इनके थ्रू जाएगा, मतलब ब्लड आपके जो टिश्यूज में जा रहा है लाइक हार्ट से जो बॉडी की तरफ जा रहा है ब्लड, वो किसके थ्रू जा रहा है, बिकॉज ऑफ दिस टिश्यू जा रहा है। वेंट्रल हार्ट पोजिशन है, पोस्ट एनार्टेल इज प्रेजेंट, ओके। यू कैन हैव अ लुक। इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट है, ओके। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसका वो कैसा है, कंप्लीट है। कंप्लीट मीन्स इसमें माउथ भी प्रेजेंट है और एनस भी प्रेजेंट, ठीक है। जस्ट हैव अ लुक, this yellow portion you can see that is notochord, okay. This there is anus and mouth is there. Muscle segments are there, muscular post and tail at the last there is, okay. So you can have a look like a typical chordate. See बहुत important question है, very you can say most important question, okay, just most important. Why? In your exam you get that question like what is the basic difference between the chordates and the non-chordates. See in chordates notochord जो है वो present होता है, in non-chordates absent होता है notochord, ठीक है। अब ये जो नर्व कोड होती है इसमें डोर्सल होती है और होलो होती है, ठीक है। होलो होती है मतलब खाली है, जो नर्व कोड है डोर्सल साइड पर है। इन नॉन कोडेट्स यू कैन रिमेंबर दिस सीडी, ठीक है। सीडी प्ले करते हो ना तो कोडेट्स में डोर्सल है, नॉन कोडेट्स में वेंट्रल है, ठीक है। अगर इधर डोर्सल है तो ऑब्वियसली वेंट्रल इस साइड पे होगी और सॉलिड है, ठीक है। इसमें क्या है, पेरेंशियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे, और इन केस ऑफ नॉन कॉर्डेट्स ये एब्सेंट होते हैं। हर्ट इन कॉर्डेट्स वेंट्रल पोजिशन में, ठीक है। अगर नर्व को डोर्सल साइड है तो यहाँ पर आपका हर्ट उसके अपोजिट हो जाएगा, दैट इज वेंट्रल हो जाएगा। नॉन कॉर्डेट्स में क्या है, हर्ट आपका डोर्सल साइड है। इन कॉर्डेट्स पोस्ट एनाल जो टेल है दैट इज प्रेजेंट, वाइल इन नॉन कॉर्डेट्स आपकी ये जो पोस्ट एनाल टेल है वो एब्सेंट, ठीक है। अब अगर आप फाइलम कोर्डेटा को देखते हैं तो फर्दर मैंने आपको बताया था ना लाइक इन द वेरी स्टार्ट टेक्सोनॉमी लेवल पे कि जब आप फाइलम में डिवाइड करते हैं फर्दर फिर आप उनकी भी ग्रुपिंग करते हैं, उनको सब ग्रुप करते हैं, मतलब फर्स्टली आप ग्रुप करते हैं टू क्लासीफाई समथिंग, फिर आप उसकी सब ग्रुपिंग भी करते हैं, ठीक है। अब हमने इसकी ग्रुपिंग तो कर दी लाइक इन फाइलम कोर्डेटा, ओके। अब आप जब हम इसकी सब ग्रुपिंग करेंगे तो दैट इज बेसिकली फाइलम के जो सब फाइलम में 3 टाइप्स के कोर्डेटा के बेसिकली, दैट इज यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा। सिफेलो दैट मीन्स हेड इन्वॉल्व होगा इसमें। सिफेलो वर्ड जहाँ जाए ना, जहाँ पर भी आपको प्रीफिक्स सिफेलो दिखे दैट मीन्स इट इज समथिंग रिलेटेड टू द हेड पार्ट, ओके। देन थर्ड पार्ट इज द वर्टिब्रेटा, ओके। तो
So let's start with the first one, that is urochordata. See, in urochordata, notochord is present only in larval tail. Okay, notochord present तो होता, but in starting होता, maturity के बाद वो नहीं रहता. ठीक है. In cephalochordata, it extends from head to tail. See, urochordata के केस में क्या था, notochord तो है लेकिन लार्वल टेल पे ही है. ओके, नोटोकोड की ही बात हो रही है. सिफेलोकोडेटा मतलब सिर से पैर, है ना. दैट मींस यू कैन से हेड टू टेल. इस पे सिर्फ टेल पे है आपका, यूरोकोडेटा में सिर्फ टेल पे है आपका जो प्रेजेंट है नोटोकोड. सिफेलो मतलब सर, सर से पैर, सो हेड टू टेल. ओके, एंड थ्रू आउट द लाइफ रहता है. ये तो बिफोर मैच्योरिटी तक रहता है, बट ये थ्रू आउट द लाइफ रहता है. देन वर्टिब्रेटा दैट पोजेसेस नोटोकोड in embryonic period which is replaced by vertebral column in the adults. ठीक है, नोटोकॉर्ड ही है, बट जैसे एडल्ट हुआ, जैसे ही वो बड़ा मैच्योर हुआ, उस पॉइंट पे जो आपका इनवर्टिब्रेटा ये नोटोकॉर्ड जो है आपका, ये रिप्लेस हो जाएगा. किससे रिप्लेस होगा? वर्टिब्रल कॉलम से. ठीक है, एडल्ट में. ठीक, सो 10. अब यहाँ क्वेश्चन आता है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेट्स. ठीक है, यू कैन से V इज इक्वल टू C. दैट मीन जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं आपके सभी कोर्डेट्स हैं. क्लियर? लेकिन बट ऑल कोर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स. सारे के सारे कोर्डेट्स आपके वर्टिब्रेट्स नहीं होते, बट जबकि आपके सारे वर्टिब्रेट्स हैं वो कोर्डेट्स है. याद रखने का तरीका एक ये है, अगर आप सीवी तो आपको पता ही होगा, दैट इज करिकुलम विटे, है ना. बट आपको ये याद रखना है, ये सीवी नॉट इक्वल है, मतलब कोऑर्डिनेटा आपके वर्टिब्रेटा के इक्वल नहीं है. दैट मींस ऑल कोऑर्डिनेटास आर नॉट वर्टिब्रेट्स व्हाइल ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोऑर्डिनेट्स. जस्ट हैव अ लुक. सी अगेन, अगर आप वर्टिब्रेट्स की क्लास देखते हैं, जस्ट सी अगर आप वर्टिब्रेट्स देखते हैं, तो वर्टिब्रेट्स की भी जो फर्दर डिवीजन है दैट इज अग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा. ठीक है. सी दिस ए स्टैंड्स फॉर समथिंग इज लैकिंग. दैट मींस they don't have a jaw. Okay, if they bear jaw, then that will be termed as a nephostomata. If you saw again that agnetha is further the class of this thing is this cyclostomata, and in nephostomata that there is a two superclasses are there. First one is Pisces, that bear fins. That means if something is bearing fin, that means they will be Pisces. And Pisces की भी further क्या है, दो classes हो रहे, that is can have a look. Yes, chondrocytes and osteocytes and tetrapoda में अगर आप देखते हैं तो that means bear lips. मतलब आप ये बोल सकते हैं, अगर फिन्स प्रेजेंट है तो आप उसको बोल रहे हो पाइसिस. ओके, और अगर फिन्स नहीं है, फिन्स की जगह क्या है, लिम्स हैं. ठीक है, तो आप उसको क्या बोलोगे, टेट्रापोडा. okay, tetra means 4, okay, and poda means again legs या foot, तो 4 foot you can say. तो limbs के केस में आप टेट्रापोडा बोलोगे, और fins केस आप क्या बोलोगे, Pisces. So tetrapoda की further classes है, that is amphibia, reptilia, aves and mammals. Remaining lecture will be covered in the next video. So till then, do like and subscribe to my channel. Press bell icon to get new updates. Thank you so much and stay connected.